बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो स्वागत है। आज वीडियो हम लेकर आए इसका टाइटल है इंडिया जस्ट डर्ट एंड पॉवर्टी। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा मैं लोग चैनल का इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। In this video, I'm going to show you the modern India, in a city that's as close to Delhi Airport as Delhi itself. This is a place of gleaming high-rises, fancy malls and lively nightlife. Welcome to the cyber city of Gurugram. Gurugram is one of the relatively new corporate hubs of India. There's more than 60% of the top 500 Indian companies here, and there's loads of the international brand names you'll recognise on the office buildings here. You see these shiny office buildings everywhere, all over. And of course, all these companies coming here has brought a lot of wealth to the area. It's created jobs, and also it's given rise to these modern malls, these entertainment areas, and everything that we have here today. And where we are now is one of the nicest of the entertainment areas, DLF Cyber Hub. Of course, it's behind gated security, but it's super clean, really nice, relaxed place to be. Absolutely lovely. And it's so tranquil compared to the busy streets outside. What you'll find here is bars, shops, restaurants, and it's a lot of fun when the sun goes down. You can see, even though this is kind of late on a Saturday afternoon, there's not really so many people here. There's a few people walking around enjoying themselves here, but it's not super busy. It's so far removed from the hectic parts you get of some of the Indian cities. Again, such a contrast. How can you compare this to the likes of Old Delhi? And it's really just such a short distance away from here. There's also a pretty handy metro system here, getting you around Gurugram, but also you can link all the way into central Delhi. Of course, it gets a bit crowded at peak times, but if it's going where you need, it's super handy. You can avoid the roads. Golf Course Road here is one of the modern thoroughfares where the metro runs. As usual around here, it's filled with shiny office buildings, malls, restaurants and bars. Let's get on the metro right now and go to one of the biggest malls in Gurugram. Gurugram is very much a working city, so what you find is much busier on weekdays and weekends. You find me on this metro on a Saturday, and look how quiet it is. And this is Ambience Mall, supposedly the #1 mall in Gurugram, and one of the biggest in the country. Ambience Mall. Well, I've just come in and there's a ton of shops here, mostly clothing so far, but it's absolutely full of international brands and labels. It's absolutely huge, and I think I've only just scratched the surface. नाम से लग रहा है और देख कर भी। I'm always kind of daunted in these big malls. I never really know where to go. The first floor still seems to be closed, more of the same really, although less of the international brands that I know the names of. But I'm seeing signs, well, quite some good signs, that there's a food area up on the 3rd floor. So I'm certainly going to head up there, see what's going on there. Valentine's Day. Up on the 2nd floor here, more of the same really. Still some clothes, shoes, glasses, that kind of thing. I guess though, I did come to a mall, so I got to expect shops. Anyway, one more floor, and that should be the food area. Now this is where it gets a lot more interesting to me. Got a cinema there. Definitely in the food area, some not very good restaurants over there. Oh, now we're talking. This is where all the life is. There's loads of people here. People just want to eat rather than shop. This food court is packed to the brim with people. Lots of little food places around the side. Looks like loads of choice. But there's also loads and loads of restaurants around as well. I'm definitely going to eat something. I don't know what yet, but wow. Okay, let's just see what's on offer. Oh, being in here is making me so hungry. Wow. Yes. Okay, well I promised you the real modern India, and here we go. This to me is it. So I'm not going for traditional Indian food. There's so much choice from around the world here. I'm actually at Jamie Oliver's kitchen. Yep, they got one of those here in Ambience Mall. So I've ordered a pizza. It looks like kind of kooky pizza, but I think it's going to be delicious and so different from what I'm used to with Indian food. Would you look at that? That immediately looks completely different to what I've seen around here before. Let's take a bite. That is absolutely delicious. That is lovely dough. Really nice tomato sauce. Super tasty.
This is India. I bet you didn't think you could get this here, did you? That is fantastic. You're going to have to lead me to this. Up to the 4th floor now. Suppose there's bowling up here. I see a massive games arcade right by me here. I don't even know what that is. Some kind of VR car game or something. Looks kind of cool. But there's one more thing that I'm looking for here. Supposedly, this mall has India's largest indoor ice rink. Oh, and I think I might have just found it. Ice skate. Well, that's a bit of a giveaway. And sure enough, here it is. Okay, again, that was super nice. So strictly speaking, I think you have to have a ticket to get in. But I didn't have that. I asked them if I could just go and take a look. And sure enough, they let me in to take a look. Fantastic. I always loved ice skating when I was growing up. I used to be a really keen ice skater, so it's kind of cool to see this here. And that was Ambience Mall. Now let's head off and explore a completely different side to Gurugram. So were you thinking that Gurugram was just all office buildings, malls, and generally a concrete jungle? Well, it's not. The Aravalli Biodiversity Park here is a lovely green oasis, just amongst it all here in the city. And this is a perfect place, a calm oasis, just come and relax. Go for a nice walk away from the traffic, away from the horns. Look at this lovely green space here. Would you ever imagine this was in the city? So close to all the high rises and so totally peaceful. वैसे ना ऐसी जगहें होनी चाहिए शहर के अंदर. Well, it's just these endless pathways here with seemingly no frame of reference. I'm not quite sure where I am right now. But hey, it's a really nice walk. बहुत बड़ी जगह है ना. काफी ज़्यादा. That's a lovely viewpoint there. It really shows the scale of the park and the area here. So much green. Right, let's grab a tuk-tuk and get back into the heart of Gurugram. Well, if I can find my way out of it, of course. मतलब गुरुग्राम के पास है ना. 32nd Avenue here is certainly on the fancier side. It's behind gated security, of course, but it's filled with international restaurants, cafes, that sort of thing. Well-dressed people walking around. It's a lovely, calm environment. It's quite small compared with something like Cyber City, but super chill, really nice. And to think this is just across the busy road from, well, the crazy heart where we'll go to a bit later. There's corporate offices all around. You'll see names that you'll recognise dotted on the shiny buildings. And as I say, plenty of places to eat here. But for me, I think it's just a nice place just to sit and be, to people watch, and just generally soak in the kind of calm around here. It's a beautiful place. Now Gurugram is known for its nightlife. There's rooftop bars, restaurants and nightclubs scattered all around. And then there's the infamous Sector 29. Let's go there right now, check it out, have a little stop on the way. And this is it, right around the corner from the main square of Sector 29, with all its raucous bars and clubs, we have this, Leisure Valley Park. Okay, there's some music playing, but still, this is a lot more relaxed. And that's quite nice. I didn't expect a fountain and music show here. Oh well, the sun's going down. I've put this off long enough. Let's head around the corner to the infamous Sector 29 main square. Sector 29? And this is the main nightlife square of Sector 29. This place is crazy. It's surrounded by bars, restaurants, brew pubs. There is so much life here, but it's only just getting started. It's quiet at the moment, but you see this place. It's crazy. Train restaurant. अंदर बोगी बनी है मुझे लग रहा. So I'm going to start my Sector 29 experience with this train restaurant. This place looks so unique, and you're going to see why shortly. Hello. 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 मतलब थीम उसी दिया टाइप का हुआ है, थीम दिया हुआ है. खाना उस पे तो नहीं आता. नॉर्दर्न रेलवे. नहीं ट्रेन पे तो नहीं खाना आता है. देखो ना उसी तरह की वो बनाई हुई है.
So, देखे train ट्रेन पे restaurant. खाना आता It's है. called train restaurant because उसमें all of the उससे बताना tables are आगे fitted with little train tracks. A little toy train comes around automatically with the food to the table. Lovely. So देखा? I've ordered a curry, of course. Just the recommendation of the house along with the recommendation naan bread. I'm sure it's going to be delicious. Look at that, that's incredible. Lovely, lovely वापस food कैसे जाती delivered है by ऐसे? train. रिटर्न Reverse? हाँ यार बटर चिकन है. ना दिखाए बटर चिकन से मुझे तो पनीर लग रहा है, लेकिन नान भी बहुत मजे का लग रहा है. जो भी है बहुत टेस्टी लग रहा है. That's lovely. That's absolutely lovely. That curry, really nice. It starts off Paneer hai. like having a simple tikka masala or something like that. Starts off quite light, creamy, delicious, so full of flavour and spice. But then the actual hot spice is not too intense. It just builds a little in the finish, like this nice kind of heat on your tongue. The naan, lovely, stuffed with onions. Again, kind of, well, I think flavourful, but it's hard to tell because the curry's so flavourful. That was a fun experience, absolutely delicious food. I went there for the city train novelty, but also the food was really good as well. So let's finish the night now, like you have to around here really. Okay, there we go. It's still early evening, but welcome to the joy that is Sector 29 at night. It's noisy, it's brash, and there's bars everywhere. सही बना. काफी कलरफुल है ना. Wow. ये अच्छा मुझे. ये क्या हो रहा है भाई? ऐसी लड़कियां नाचने दिल कर रहा था. ये मजा है. काफी ज्यादा डिस्काउंट. हाय. And that is Gurugram, a city which I think really showcases the new India. And I hope it's shown you what India can be. That it's so much more than you might see on some other vlogs, just showcasing the old city areas and that kind of thing. That typically as a tourist is where you kind of start off. But it's so much more. This is a country of amazing contrasts with so much to offer. Anyway, thanks for watching. I hope you enjoyed the video. Please do consider subscribing if you haven't already. Most people don't, but it will really help support the channel. And I hope you'll join me next time. See you later. मजा आया देखकर मुझे. वैसे आज काफी डिफरेंट जगह उन्होंने एक ही ब्लॉग में दिखाई ना, तो काफी अच्छा लग रहा था. वो असल में गुरुग्राम की जो है ना, पहले हम वीडियो देखते हैं ना, वो स्पेसिफिक जगह की होती थी, लेकिन आज जो है वो काफी ज्यादा उन्होंने जगहों पे गए. खास तौर पे जो वो बायोडाइवर्सिटी पार्क में गए हैं ना, अच्छा वो वाकई बहुत लग ही नहीं रहा था कि यार शहर के पास इतनी शांत जगह जो है वो है. ये पर गुरुग्राम भी जो है वो प्लांट सिटी में आता है ना. हाँ, प्लांट सिटी है. तो मुझे लग रहा है कि इसीलिए उसके पास इतनी ज्यादा ऐसे आपको जंगल जैसा जगह जो है वो देखने को मिल रहा है. नहीं यार, ये गवर्नमेंट ने प्रिजर्व जो है वो की होगी, क्योंकि मुझे याद पड़ता है हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें जो है ना मेट्रो एक जगह से गुजर रही थी और दूसरी साइड पे दिल्ली की मेट्रो और दूसरी साइड पे काफी ज्यादा जो है ना हरियाली थी. तो मुझे लगता है कि वो गवर्नमेंट ने प्रिजर्व जो है वो करके रखे होंगे. मेरे ख्याल दिल्ली में एक नेशनल पार्क भी है, शायद संजय गांधी नेशनल पार्क है वहाँ पर. नो आइडिया. तो ये तो दिल्ली में या मुंबई में, दोनों में से कहीं एक जगह पर जो है वो है. तो मेरा ख्याल है कि ये शहर की जो है ना एक एटमॉस्फेयर को भी जरा ठीक है, काफी काफ़ी ज़्यादा आपको जो है वो चीज़ें इश्यूज देखने को मिलती हैं, एयर पोल्यूशन देखने को मिलता है, लेकिन जो है काफ़ी ज़्यादा बैलेंस रखने में हेल्प करती हैं. मेरा ख्याल है शहर के इर्द गिर्द ऐसे होने चाहिए. बिल्कुल. और एम्बियंस मॉल हम लोगों ने पहले देखा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लग्जरी ब्रांड्स होते हैं. फिर उसके अलावा आई थिंक वो एक जो जगह है उसका नाम साइबर सिटी है ना शायद, वो जहाँ बहुत ही एक डिफरेंट सी प्लेस बनी हुई है. साइबर हब है मेरा ख्याल. साइबर हब है या साइबर सिटी जो भी उसका नाम है, वो भी बहुत खूबसूरत है. फिर उसके अलावा उन्होंने जो सेक्टर 29 दिखाया ना, 29 ही था ना. हाँ, सेक्टर 26 में बहुत गलत हूँ हैं. 26 मूवी थी. 26 या 36 थी? 26 थी. अच्छा. हाँ. तो कंफ्यूज ना किया करें यार. क्या करूँ, मैं खुद नंबर्स में बहुत कंफ्यूज होती हूँ, सच बता रही हूँ. बस यही नंबर में कंफ्यूज होती हैं. कौन से नंबर्स में? ये वाले. नहीं, मैं सच में एक्चुअली में मुझे डेट ऑफ बर्थ नहीं याद रहती. मुझे एक्चुअली में नंबर्स की प्रॉब्लम है. मुझे कोई मर भी जाता तो उसका अभी याद नहीं रहता कि कौन सी डेट को मरा था. अरे सच में. हाँ, सही कह रही थी. बाकी अगर हम लोग वीडियो की बात करें तो मैं कहूँगी कि जो रेस्टोरेंट थे वो भी काफ़ी आपको
अच्छे आप कह लो कि नजर आ रहे थे, जहाँ पर फाइन डाइनिंग आपको नजर आती है। मुझे तो ट्रेन वाला रेस्टोरेंट जो है बहुत अच्छा लगा है। हाँ, मौसम से शुक करता हुआ जरूर जाएगा वहां पर, क्योंकि हाँ। ट्रेन मौसम के फेवरेट। हाँ, नहीं वो खाना भी जिस तरह लेकर आती है ना, वो एक वाकई यूनिक आइडिया। इससे पहले भी हमने जो है इस तरह की एक वीडियो जो है वो देखी थी, जो ट्रेन रेस्टोरेंट था और ट्रेन रेस्टोरेंट था वो, बोगी थी उसमें। हाँ, बोगी थी, लेकिन इसमें जो है ना पूरी सर्व ट्रेन ही आपको जो है वो सर्व करती है। वैसे यार अच्छा एक आइडिया ये भी है ना। हाँ, बिल्कुल अच्छा आइडिया। मजा आएगा ना, मतलब पहली दफा बंदा ट्राई करे। वैसे ट्रेन चलती कैसे होगी? ये अब तुम जाके उनसे पूछो, सेंसर मुझे से क्या चलती पता होगी। लेकिन एक चीज मुझे ये अच्छी लगी है कि ना उन्होंने ऐसी मॉडर्न साइड दिखाई है जो कि यूजुअली वेस्ट का मीडिया नहीं दिखाता। सो मुझे लगता है कि ये चीज़ें बड़ा एक अच्छा है कि जितना टूरिज्म बढ़ रहा है, बाहर के लोग जो हैं वो आकर इस चीज़ को डिस्कवर कर रहे हैं, इंडिया को और एक्सप्लोर कर रहे हैं। और इनफैक्ट जितनी वीडियोस हम लोगों ने देखी है, मैं एक चीज़ मानती हूँ कि इंडिया में आपको सच में इंडिया के अंदर ही आपको इतनी डिफरेंट साइड्स नजर आती हैं ना कि आप हैरान होते हो देखकर कि ये चीज़ सब कुछ जो है आपको इंडिया में देखने को मिलता है। आपको ट्रेडिशंस भी देखने को मिलते हैं, आपको मॉडर्न स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है, मतलब हर तरह का फ्लेवर। जैसे अगर हम स्पाइसेस की बात करें तो इंडिया जो है स्पाइसेस को लेकर मुझे क्या लगता है, मतलब स्पाइसेस को लेकर मतलब एक नाम है इंडिया का। हाँ। इसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के लाइफस्टाइल को लेकर, लोगों के डिफरेंट आप कह लो कि कल्चर्स को लेकर भी आपको वो फ्लेवर जो है ना वो सिर्फ आपको इंडिया में ही देखने को मिलता है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आप में से कौन कौन सेक्टर 29 में जाता है। 29 ही था ना? हाँ, 29 सेक्टर कौन कौन जाता है, एंजॉय कौन करता है, क्योंकि मुझे वैसे वाइब अच्छी लगी है। वैसे जहाँ पर डांस कर रही थी महिलाएं, डांस कर रही थी। हाँ। और नहीं, एक ओपन एरिया भी था जहाँ पर सब लोग म्यूजिक सुन रहे थे, वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मुझे जो है वैसी जगह की वाइब बड़ी मजे की होती है। वैसे यहाँ पर इस तरह का कुछ भी नहीं होता, लेकिन हाँ एक चीज आपको देखने को, यहाँ पे क्वाली नाइट्स जो है आपको देखने को मिले, जैसे चाय वगैरह वाले रेस्टोरेंट होते हैं ना, वहाँ पे बैठ के जो है ना वो एक साइड पे क्वाली चल रही थी, एक साइड पे लोग एंजॉय कर रहे थे। लेकिन इसकी अपनी एक वाइब है, क्योंकि यहाँ पे एक जो उनका सिटिंग अरेंजमेंट भी डिफरेंट था, और बैंड जो आया हुआ था, मे भी हो सकता है डिफरेंट बैंड्स आते हैं। यहाँ पर जो म्यूजिक लाइव सुनने को मिलता है उसमें कवाली भी है, फिर उसके अलावा अगर आप जैसे अंदरून में चले जाते हो वहां पर भी आपको लाइव म्यूजिक सुनने को मिलता है, लेकिन वो तबला वगैरह उसका भी अपना एक फ्लेवर है, मैं कहूँगी। हाँ, वो मजा आता है वो सुनने का। या फिर अगर हम बात करें तो अब आकर थोड़ा सा ट्रेंड चेंज होना शुरू हो गया कि आपको ड्रम सर्कल्स ये एक्टिविटी नजर आना शुरू हो गई है, और कहीं कहीं पर मौजम बैंड्स भी जो है ना, जैसे जो चाय के कैफे है ना, वहां पर मैं देखती हूँ कि कहीं कहीं पर ये ट्रेंड अब स्टार्ट हो गया। पाकिस्तान बहुत पीछे है हर ट्रेंड को फॉलो करने में। एनीवेज, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन, गुड बाय।